Hello students, hello everyone. After many days I'm back with my new video. Actually I was too busy in my work, so I was not making any video. But today I'm back with my new video. Okay. So without wasting time, let me tell you what I'm going to discuss in this video. In this video I will discuss about if-else if statement. I will start from there where I have stopped. From there itself I'm going to start. So in this video, I will discuss about if else ladder, if else if statement. Okay. So before explaining if else if statement, I will explain one basic concept of if else statement. One basic concept I am going to introduce and I will explain it. This is very important concept we must know. Okay. So let's start with that basic concept without wasting time. See, what is the concept here? That if there is only one line in if block or else block, अगर if block में या else block में सिर्फ एक लाइन है तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब ये see this, for example, you can see in if condition in if block and else block there is only one statement. So for only one statement, opening closing bracket is not required. You can write the same statement as the same statement can be written like this without opening closing bracket. Means for one line, no need to write the opening closing bracket. You can write like this. Okay. But there are two point of views regarding this concept. So I am going to explain it and listen carefully, otherwise you will be confused. ध्यान से सुनना है तो confusion create होगी और ये concept पता होना चाहिए तुम्हें, बहुत useful है. So listen, consider this example. One more system.out.println I'm taking. Okay. Now the first point of view. The first point of view is what? If you have a question of output in your question paper, then you have the question of output in the question paper. If you have that and that question is of if else statement. फिर से बता रहे हैं, अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो आउटपुट वाला क्वेश्चन है वो इफ एल्स का क्वेश्चन है और उस इफ एल्स के प्रोग्राम में क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, तब इफ ब्लॉक के अंदर या एल्स ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक लाइन कंसीडर करो. ये ब्लॉक के अंदर या एल्स ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक लाइन कंसीडर करो. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये कंसीडर करो कि क्वेश्चन आउटपुट वाला, इसका तुम्हें आउटपुट बताना है. तो यू कैन सी इफ ब्लॉक हैज no opening closing bracket, it has no opening closing bracket, else also does not have any opening closing bracket. It means there is only one line in if block and there is only one line in else block. This line in which I am printing, consider it is by, not hello, it is by. So this line is not in the else block because there is no opening closing bracket. It means there is only one line in the else block. This line you will not consider within else block. Again I am repeating, if you have the question of output in your question paper and it is of if else statement and there is no opening closing bracket, in that case you will consider only one line in if block and in else block. Okay, let me tell you, consider if this condition is true. If the condition is true, in that case this high will be printed. After printing high, the control will not go to the else statement, else block, because condition is true. Then it will go to this statement and you'll have the output by. Consider this condition is false. When the condition is false, in that case this statement will not execute, it will go for else. For this statement, hello will be printed, and after printing hello, the by will be printed. So by this statement will execute all the time, whether this condition is true or false, it doesn't matter. ये statement हमेशा execute होगा क्योंकि ये if else में नहीं है, else के बाहर है और इसका इस कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने से कोई मतलब नहीं है, ये हर बार एग्जीक्यूट होगा.
तो मतलब ये कि हमने एल्स के अंदर सिर्फ इस लाइन को कंसीडर किया है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. एंड सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से सुनना. You are writing your program you are writing, okay, and you know your logic very well. तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, तुम्हारा लॉजिक है, तुम अपने लॉजिक को बड़े अच्छे से जानते हो, ओके. और तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में सिर्फ एक लाइन है, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ओके. और अगर एक से ज़्यादा लाइन है, तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर एक से ज़्यादा लाइन है, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कंपलसरी है. कब? जब तुम अपना प्रोग्राम लिख रहे हो, खुद का प्रोग्राम लिख रहे हो, ओके. सो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान रखना. अगर तुम अपना खुद का प्रोग्राम लिख रहे हो और अगर तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग इफ के अंदर एक ही लाइन है, एल्स के अंदर एक ही लाइन है, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो. लेकिन अगर एक से ज़्यादा लाइन है इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट कंपलसरी हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है. सो इट विल बी यूजफुल. नहीं तो बहुत मिस्टेक करते हो तुम लोग. Now coming back to the syntax of if else statement. Okay, this is also called if else if ladder. Okay, see, this is the syntax, and here I have not written opening closing bracket because I have taken only one statement for each if block or else block. I have taken only one statement, so that's why I have not written opening closing bracket here. Okay, if I will take opening closing bracket and if I will take more than one statement, this syntax will be too long. So to reduce the syntax, I have taken only one statement for each if block, and that's why I have not written opening closing bracket. Okay. Okay, so coming to this, if this condition 1 is true, I'm going to explain the working of this. If this condition 1 is true, the statement 1 will execute. Statement 1 will execute. Okay. And if condition 1 is true, condition statement 1 will execute, and control will not go for these else statements. It will directly jump to, after executing it will jump to here after else. Okay. And if this condition 1 is false, if the condition 1 is false, then control will go for the else, and condition 2 will be checked. Means next condition will be checked when previous condition is false. So this condition, if this condition 1 is false, then control will go for else, and this condition 2 will be checked. If it is true, if this condition is true, statement 2 will execute, and then control will jump to the outside the else. सीधे if else के बाहर चला जाएगा. मतलब इस else के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा. ये लाइन इस else ब्लॉक में नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो else के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है, ये if else के बाहर है. ओके, लाइक दिस इफ कंडीशन 2 इज फॉल्स, और कंडीशन 2 फॉल्स होती है तब कंट्रोल एल्स पे जाएगा और कंडीशन 3 चेक होगी, स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा. ओके, एंड लाइक दिस सो ऑन. In case when all the conditions are false, जब सारी conditions false हो जाती हैं, मतलब 1 false यहाँ आएगा, 2 false यहाँ आएगा, 3 false फिर यहाँ आएगा, so on, n भी false, तो n भी false तो यहाँ आएगा. When all the conditions are false, जब सारी conditions false हो जाएंगी, तो ये else लास्ट वाले else में यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. देखो यहाँ पे कोई if कंडीशन नहीं है, तो जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखे रहोगे लास्ट वाले else ब्लॉक में, वो एग्जीक्यूट होगा when all the conditions are false. So this is the working of if else if statement, and please remember it is also called if else if ladder. Okay, I will explain this with one example. I'm going to write one example and then I will explain it. Okay, so here I am with one example. In this is a program in which we are checking an entered number is a positive number, negative number, or zero. That we are going to check whether the entered number is positive, negative, or zero. Consider this, the value of n we are taking as 5. Okay, so here this condition will be true for for positive number means what? Positive number means the number which is greater than 0. So that's why this condition I have written here.
So consider the value of n we are entering as 5. So this condition will be true. If this condition is true, you'll have the message 5 is a positive number. You'll have the output 5 is a positive number. Okay. And since this condition is true, so control will not go for this and this. And then if main close, class close, so control will go outside the program. Okay. Consider we are entering -5. Instead of -5, we are entering -5. मतलब -5 input करते हैं. In that case, this condition will be false. And control will go for this else, and this condition will be true. Then you will have the message -5 is a negative number. Okay. Else. And okay, and then this since this condition is true, so control will not go for this, and it will go here and will go outside the program. Then if finally third time you are running the program and you are entering n as 0, consider you are entering, you are giving 0 from the keyboard, so the value of n will be 0. In that case, see, if when the value of n is 0, in that case this condition will be false, so control will go for this else. This condition will also be false, so then this condition control will go to this else, and here we have no condition, so this statement will execute. You will have the message it is 0. Okay, मतलब जब मैं बताया था when all the conditions are false, then this else statement will execute. Okay, so यहाँ पे दोनों कंडीशन, दो ही कंडीशंस हैं, दोनों फॉल्स हो गई तो कंट्रोल यहाँ पे आया, और यहाँ कोई कंडीशन थी नहीं तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. ओके, और अगर मान लो अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 0 होगा. तो यहाँ पे इफ n इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे तब भी सही है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है. अगर वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, 0 ही है. तो यहाँ पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है. ओनली एल्स विल बी ओके. And when you will enter n, the value of n as 0, this condition will be false, it will go for this. This condition will also be false, control will go for this, and you'll have the message it is 0. So this is all about if else statement. And for this video, this much only. Please watch this video carefully, repeat if you are getting confused, and if any doubt you can ask in comment section. So wait for my new video. Till that, thank you for watching. Bye.